Check now. All right, good. We live now, and it looks like everything is checking now. All right, guys. Okay. All right. Okay. We live now. Can you see Instagram? Anyone on TikTok? Not on Instagram. Is it? Are you sure about it? It's saying me here. I'm connected. I'm streaming. Could it be possible you're missing? Could it be possible? Hi guys, D Aluwalia again. Now guys, all right, okay. Let's wait for a few people to log in. All right, and yeah, we still getting all these glitches. Imansha has joined. Thank you. Guru has joined. Rustam Astan, Neo Aluwalia has joined. What do you mean? You're receiving it from two channels. You're open two channels. That's why they're dubbing it. So you can hear from me here and hear from there as well. What do you mean? Hmm? Are you sure it's still happening? It's still doubling up? Guys, can you just confirm with me? Hmm? शाहरुख भाई चंडीगढ़ जब बुलाओगे तब आ जाएंगे जल्दी आएंगे अभी सिडनी छोड़ नहीं रहा alright okay alright guys okay let's talk about is it fine now wonderful guys alright guys so let's look into it we got few people on YouTube we got now guys okay let's लेट्स टॉक अबाउट आज का टॉपिक पे बात करते हैं कि बेसिकली अभी द न्यू ईयर हैज स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन ओके आप लोग सब वेट कर रहे हो यू ऑल आर वेटिंग फॉर द इन कि अभी तो बेसिकली फेडरल ने ही सीट्स एलोकेट नहीं करी है जब फेडरल डिपार्टमेंट सीट्स एलोकेट कर देगा ऑलराइट व्हेन द फेडरल डिपार्टमेंट विल एलोकेट सीट्स उसके बाद में you will okay then it will go to the states the जितनी भी सीट states को allocate होंगी and then the states will come up with their strategies and what would their requirements would be in terms of making you can make the lodgement for EOI and ROI depending upon which state it is and which surplus it is. Now, if we really put it in short, the bottom line is कि अगर आप कोई भी स्टेट देखो आज की तारीख में डजंट मैटर व्हाटएवर इवन द वीक जो सबसे सबसे रिमोट स्टेट्स हैं एग्जांपल टेस्मेनिया हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया गाइस अगर आप अपनी जॉब में अपनी ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर रहे हो
it is highly unlikely you're gonna get your permanent residency. That's one thing is clear and it is super 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 clear. अगर आप सोच रहे हो कि आप पढ़ाई कर लोगे, स्किल असेसमेंट करा लोगे एंड आपको लगता है कि उससे आपकी आपका इनवाइट आ जाएगा, देखो, लेट्स पुट इट दिस वे, ओके, लेट्स लुक एट लास्ट ईयर्स नंबर, ठीक है, लाइक एंड बिकॉज इट गिव्स अ वेरी फेयर एग्जांपल टू अस। अगर हम लास्ट ईयर्स के नंबर्स देखते हैं, देवर रफली 185,000 seats, okay, who would get permanent residency. उसके अंदर में of course partner visas हैं, family visas हैं, we put them separate. So roughly around there was like all 130 135,000 seats जिनको PR आना था. Then again there was a big category for subclass 186, subclass 494. What you gonna be? Okay. And then of course the remaining seats were for 189, 190 and 491. Now, when you look at these numbers, all right, yes, you can apply. You would be able to apply invites आने वाला नहीं, अगर है ना टोटल, अगर जो भी 60-70,000 सीट्स हैं थ्रू इनवाइट्स जो मिलना है, उसमें से हाइपोथेटिकली अगर 500 माइग्रेंट्स को इनवाइट आ गया जो अपने ऑक्यूपेशन में जॉब नहीं कर रहे थे, यू कैन रियली रिलाई। So apply the common sense, all right, apply common sense, and then we can look into it and we can see how things grow, all right. आपको अपने ऑक्यूपेशन में जॉब करना बहुत ज़रूरी है. नाउ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम माय प्रोस्पेक्ट, इवन look at the states like Tasmania in the last physical year. Tasmania also need, okay, let me wave of you. Hello everyone. And I love to see you guys here. I love to see you guys here. Even अगर आप देखोगे last year में भी, okay, in the last physical year if you look into it, okay, जो सबसे weak states भी थे Tasmania और Northern Territory, they also wanted the applicants who are applying, they should be in their state, they should be working in the occupation what they have applied for. Then of course there was a criteria कि इतने महीने के लिए आपको जॉब करनी होनी चाहिए थी, and on top of that you should also getting paid on testament rate. So this is my request, जो नए migrants आ रहे हैं और new students आ रहे हैं, भाई अगर शुरू से ही अपना गोल अलाइन करके रखोगे ना, यार, target goal is always try to make a target for 186, try to make a target for 494. What I'm trying to put across is I would never tell you to study this, do this. No, that is something you got to choose. That is something you need to choose what you want to do. Okay, वो मैं नहीं बता सकता, but yes, I can tell you किसके क्या prospects हैं. So for example, okay, let's take an example like which occupations are like cooks and chefs. Now today's testament rate is 76,500 something something plus super. So mota mota it is around $85,000 including super. Now भाई शेफ को इतने पैसे नहीं मिलते अनलेस एंड अनटिल आपको 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, इंडिया दुबई वही में 5 स्टार में काम करके आए हुए हो, एंड यू आर ऑन सू शेफ लेवल और एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल, आपको इतने पैसे नहीं मिलते. एग्जीक्यूटिव शेफ को जाके इतने पैसे मिलते हैं. सो यू गॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल. ऑलराइट, okay, there was somebody just passing by the window. Okay guys, now guys this is also, so again उसको लॉजिकली आप देखो. ओके, डे वन से आप है ना बड़ा गोल पकड़ो डे वन से, ठीक है. और भाई आपका गोल यहाँ पे सी, इट इज नॉट नेसेसरली दैट you want to get your PR through subclass 186 employer sponsorship or subclass 494 employer sponsorship. But your goal should be कि by the time you reach to the target, आप पहले आते हो, you probably study for 2 years, then depending upon if most of like if you're doing a masters,
probably get a 3 years. If you are Indian, you probably get a PR for 3 years. So you got a time frame of 5 years. If you come for bachelor, you study for 3 years, then you get a TR for 2 years. The time frame is 5 years. Okay. Now, or okay, let me put this across to you as well. IT students. Okay. Now, when students are coming here in Australia, a lot of you come for masters in IT. A lot of you come for you don't come for engineering degrees; they are very expensive. All right, or you come from stuff like MBA, or you come from stuff like accounting, right? IT के अंदर में first of all जॉब्स जा रही हैं, ठीक है? अच्छे अच्छे लोगों की अच्छी अच्छी जॉब जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आई एग्जैक्टली टेल यू कि आईटी में आप किससे कम्पीट करोगे। अगर आप इंडिया से आईटी सीख के नहीं आए हो और आपके चांसेस आईटी में पीआर लगने के वुड बी वेरी वेरी स्लिम। मैंने से इंडिया चाहे आप लाइक जहाँ भी हो, आप बेसिकली साउथ एशिया, कुड बी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे भी हो, अगर आप घर से नहीं सीख के आए हो तो भाई यहाँ कोई ना सिखा के तनख्वाह नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की जितनी टॉप कंपनीज है ना, उन सबके कॉन्ट्रैक्ट है ना, टीसीएस के पास है, विप्रो के पास है, एसेंशियल के पास है, इन सब कंपनीज के पास है। और इन सब में जितने आईटी के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं ना, 90% दे आर इंडियंस, और 90% ऑफ देम आर करंटली ऑन 482 वीजास, और उनको 10 10 12 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। ऑलराइट, तो आप उनसे कंपीट करोगे। जब स्टेट को स्पॉन्सर करना है, कंट्री को स्पॉन्सर करना है, तो वो कैपेबिलिटी देख रहे हैं, आपकी शक्ल नहीं देख रहे हैं। अब और देखो, ये बात और समझो, और बहुत इसको आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियर। आप जब आते हो, ठीक है, आपकी नॉलेज लिमिटेड होती है। आपको सही गेम यहाँ आने के बाद समझ में आता है, अनलेस अनटिल कोई बड़ा भाई बहन हो आपके यहाँ पे, ठीक है। और जब आप यहाँ पे हो, डे वन से आपको गेम समझना जरूरी है। आई अंडरस्टैंड पैसे भी करने, आई अंडरस्टैंड भाई, मैं भी 25 साल पहले स्टूडेंट ही आया था, ठीक है। मैंने भी स्किल असेसमेंट कराई थी आईटी में, मैंने भी 189 लिया था। उसके बाद कई साल नौकरियां करी थी, एंड देन लास्ट 16 ईयर्स आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस। और नौकरियां भी करी थी, तो आई वर्क फॉर कंपनी लाइक टेस्ला ऑफिस, आई आल्सो वर्क फॉर ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस। सो आई हैव डन माय जर्नी। और स्टूडेंट आया था तो हमें भी, मुझे भी पता है। अभी तो इन योर टाइम इट इज स्टिल वेरी गुड एंड वेरी नाइस। जब मैं यहाँ एज अ स्टूडेंट आया था, तब स्मार्टफोन भी नहीं थे, ठीक है। आई केम हियर इन ईयर 2000, तब स्मार्टफोन भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ऑलराइट, और वो हमारे पास मेलबे या सिडनी में होती थी, एक तरफ से दूसरे रास्ता भी देखने जाना होता था, इतनी मोटी किताब होती थी, वो सीखने में 2 4 महीने लग जाते थे। तो अभी कंपेरेटिवली थिंग्स आर मच मोर ईजियर इन दैट रिगार्ड। Now, guys, I'm so glad you guys are listening to me. I am more than happy to answer any of your questions, whatever you have, and you can ask me those questions, whether it is in terms of your occupation, field, visa categories. I'll do my best to answer you those questions. And as I said to you, yeah, if any of you have any questions, why सल, सलमान, यहाँ पे जॉब सबका रहता है भाई, हर चीज से रिलेटेड रहता है, लेकिन यू शुड बी गुड इन योर फील्ड, दैट यू शुड बी एम्प्लॉयबल। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई बिकॉज यू गेट पेड लॉट ऑफ मनी। एंड ऑफ द डे वो मनी आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है। सो हाइपोथेटिकली जब इंडिया में आप 50,000 रुपये की जॉब कर रहे हो, तो एम्प्लॉयर को आपको उसी लेवल का ही आउटपुट देना है। सो यू गेट माई पॉइंट। So again, coming back, I am more than happy that if you guys have any question, I'm happy to answer all your questions. Okay, and yeah, इंजेक्शन मोल्ड इंडस्ट्री के जॉब रहते हैं ब्रो। इंजेक्शन मोल्ड इंडस्ट्री के जॉब्स तो रहते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट रियली अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। ओके, इट्स अ वेरी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर वेरी वेरी लिमिटेड इन ऑस्ट्रेलिया। इफ यू रियली लुक इनटू ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, वी डग अवर डर्ट, वो सब सामान तामझाम हम यहाँ से बेचते हैं भाई। हम अपना अपना लाइक ऑल मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, इवन गैस, हम चाइना को, जापान को और इंडिया को भेजते हैं।
All right, that's what we do, and we get the finished product back from them. So it's not a manufacturing country. So there is very limited manufacturing happening. Yes, there is molding does happen there, but it is very limited. Hi, okay. I am studying right now in University of Bachelor of Business Analytics. Can I change my university to change without changing course? Yes, you can do that as long as if you have studied 6 months and you are going to on a same level, you can definitely change it. There is no problem. Like there's a link on the okay. There's a link on the DM, all right, of WhatsApp. Just WhatsApp your name, where you are studying, and what you want to change. So I'm assuming you want to get something more economical. We can look that for you, and you are not in any sort of a breach. As long as you are here, studied 6 months in Australia, and you are going on the same level or the above level of your course, you are not in the breach. You can do that. How is the scope of pharmacy? I recently cleared my cap. Lovely, bro. Congratulations if you cleared your cap. So, what's scope? Look into the regional area. That's where they find it hard to find pharmacists. Okay. Sydney, Melbourne, Brisbane is flooded. Even Australians find hard to get the job. And try to find a job. Don't go into big chains like Kemet Warehouse. Try to find a job in those वह small or two or three shops वो लोग आपको sponsor जल्दी करेंगे. You find it hard because big companies have so much of resources. Though even if you look at actually if you look at chemist warehouse as well, it is all chemist warehouse is a franchising model. So it is basically, in a sense, these are small businesses, and if you can work hard for them and you can demonstrate them, they will hire you, bro. Because and yeah, again coming back, there is a lot of demand. Again, if you will be in a metropolitan city, the demand would be much higher. If you go to the regional area, the chances of getting an invite would be stronger. But of course, you got to work as a chemist. But and again, congratulations. All right, guys. Now, my pleasure, brother. Good luck. You are having this one. Yeah. Email zero. Oh, bro. Thank you. Somebody funny on. Okay, that's all good. Brother. I respect that. Okay. Would you rather watch a tree grow or a knee grow? Bruce, I rather like you to grow. Okay. All right. Hi. What about sponsorships, sir? Sponsorships are great, bro. And it's not hard to get a sponsorship in your field of work because, again, केमिस्ट की दुकान बिना केमिस्ट के चल नहीं सकती है. ऑलराइट, रीजनल एरिया में आप ढूंढोगे. पहले ऑफ कोर्स nobody gonna directly sponsor you. I don't know when your visa is running out. Again, and if you pass caps, yeah, you get your skill assessment done. I don't know whether you are here or onshore or offshore because you can get through caps offshore as well. If I don't know if people know about it, but anyways, you can contact our office. Like link this bio on WhatsApp. We can discuss this in more detail. What exactly you should do and what should be your strategy if you're here in Australia when your visa is running out. I have a tourist visa and I have been there for 4 times. Is there any possibility to convert my visa? It depends, bro. They are like rice, margin. See, there are many possibilities. Basically, other than you can't jump on a student visa anymore, उसके अलावा बहुत सारी possibilities are like, but I don't know what you have done. What are your skills? What is your occupation? And again, the bottom line is, generally speaking, if you want a direct jump or from tourist visa, you need an employer to sponsor you, but you also should have some sort of skills where they will meet the gap. But again, that's something we can talk about it. You can always book a free consultation. We're happy to talk to you and see what situation is it, and then we can give you a personal advice. Can you help agencies in India who are requiring an immigration lawyer for US, UK, Australia? Also,
they're very sorry, we don't do that, it's just a headache, we are unable to get compliant. भाई यहाँ पे ना बहुत स्ट्रिक्ट हिसाब किताब है, वो इंडिया में जैसे काम होता है वैसे यहाँ पे नहीं होता था, तो ये झंझट ही है, वरना भी झंझट में नहीं पड़ रहा, काफ़ी काम नहीं है, बिजी है। या राइस मार्जिन, अगर सेल्स और मार्केटिंग वाले हैं तो यहाँ पे आके किसी को सामान बेच के दिखाओ, एम्प्लॉयर के लिए पैसा कमा सकोगे तो कोई भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा मेरे भाई, बड़ी सीधी सी बात है। How can you contact me? There's a WhatsApp link. There's a WhatsApp link in DM. You can just WhatsApp us, and there will be a link come up, and you can contact to us through that. There. अरे अब तो YouTube भी चेक करना। Cool. सर ऑस्ट्रेलिया से सेफ टू लिव। अरे भाई कहाँ से हो? इंडिया पाकिस्तान से तो सेफ ही है। What is the immigration crisis in Australia? I didn't got. I didn't understand your question. If you elaborate it, then I may be able to answer you. Immigration crisis in Australia. What is the immigration crisis in Australia? What does that mean? आप मुझसे ये फिर से पूछो क्वेश्चन, then I'll be probably able to answer you because I can't understand your question. What do you mean by that? Okay, guys. If you have any further questions, I'm happy to answer that. In the news, they are saying there is an immigration crisis. Yeah, देखो, Roy. All right. Okay. Bro, listen. There is always a drama. Yeah. Okay. Uh, I'll explain you like I'll explain you in a very simple term why Australia actually migrated. Okay. There are many reasons for it. Now the fundamental reason is our birth rate is 1.61. So मोटा मोटा उसका मतलब ये है कि a couple only produce 1.61 babies. So, and we are a developed country. So, and our average age is now roughly 87, between 87 to 90, and people get retired at age 67. तो हम अपने बच्चे ही नहीं पैदा कर पा रहे हैं इतने, ठीक है, यहाँ पे, इसलिए हम बच्चे इम्पोर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद में वो हमारा इन्फ्लेशन भी रो होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो जब माइग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं तो सब और जॉब करते हैं, वो जॉब होती है जल्दी बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो वो हमारी इन्फ्लेशन भी लो रखता है कंट्री की। तो इमिग्रेशन बंद नहीं हो पाएगा, छोटी सी कंट्री है, हर 3.5 साल में यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। ऑलराइट, सो वो ड्रामा चलता रहता है। इमिग्रेशन, ये तो या देखो, जाके ना ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री पढ़ो, टोटल इसको तो भाई कैप्टन कुक ने आके बताया था, ठीक है, इसको तो बसे ही अभी 200-250 साल हुए हैं यार, ज़्यादा हुए ही नहीं है। ऑलराइट, वो पूरा ऑस्ट्रेलिया ही इमिग्रेशन से ही बसा हुआ है। पहले गोरे आते थे, अभी गोरे भी, वाई इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज, अभी गोरे क्यों नहीं आते यहाँ पे? कभी सोच के देखा? ऐसा थोड़ी ना है कि ऑस्ट्रेलिया को एकदम अचानक से पसंद आने लग गए एशियंस, साउथ एशियंस एंड गोरा होने लग गए। भाई वो जो जिन कंट्री से गोरे आते थे उनके यहाँ भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। मे बी इट ब्रिंग सेंस, आई होप सो। So थोड़ा बहुत न्यूज़ में चलता रहता है, ड्रामाबाजी है, बट ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड कंट्री, सेफ कंट्री, एंड आई डोंट सी कि इमिग्रेशन वुड गोना डाई डाउन। नहीं तो वो काम कौन करेगा? Alright guys, do you have any more questions? I'd love to answer you if you have any further questions. As we can see,
Alright. Well, and Iqbal, are you logging on Instagram, on TikTok? Iqbal has just joined us. नया नया लौंडा काम सीख रहा है। हाँ ब्रो, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसी रीज़न से है ना। ओपन तो सबके लिए है ना, किसी का हाथ थोड़ी ना पकड़ा है। तो क्राइटेरिया तो हर कंट्री के लिए सेम है। जैसे रीज़न है ना, हमारे माँ बाप के बच्चों के माँ बाप के पास पैसा रूल कर रही है, इसलिए है ना। चाइनीज भी लॉट्स हैं, ठीक है, इंडियन से ज़्यादा चाइनीज, राइट। सो नंबर वन पे चाइनीज है, नंबर टू पे इंडियन है। क्यों है? क्योंकि ये दुनिया इकोनॉमी है, यहाँ पे माँ बाप के पास पैसा है, किसी का हाथ थोड़ी ना पकड़ा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश वाले या श्रीलंका वाले, नेपाल वाले भी बहुत है, ऑलराइट, उनकी स्टडीज थोड़ी डिफरेंट है। नेपाल वाले भी बहुत, इंडिया के बाद सेकंड नंबर नेपाल वालों का है, ऑलराइट है। श्रीलंका वाले ये लोग नहीं चाहते क्या आना, क्या बात कर रहे हो भाई। माइग्रेशन यूके से, आयरलैंड से, हाउ मेनी इंडियंस भाई गिने नहीं है, लेकिन गिन के बताऊंगा। लेकिन आई टेल यू व्हाट, there's a good population, it's a highest growing population in Australia। ये देखो बता रहा है 490 की 90 के पूछा ना ये क्वेश्चन, 719 के Indians have migrated roughly, so yeah, and probably half a million temporary migrant only out of a population of what we have just now reached around 26 million। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं कि सर मोमो शॉप पॉप अप कर रही है, ऐसा नहीं है। वो भी यू नो, ऐसा बहुत सारा बिजनेसेस है, ऑलराइट। मैटर ऑफ फैक्ट मैं तुमको बताऊं, मैं जहाँ पर यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, ठीक है, मेरे पीछे जो बैक साइड में हेयर सलून है, वो लेफ्ट हैंड साइड में एक टोकरी का कॉलेज है, उसके ओनर नेपाली है। ऐसा नहीं है कि सर मोमो की दुकान ही खोल रही है, ऑलराइट, दे आर डूइंग सम वेरी गुड बिजनेसेस एज वेल, सब मिक्स मैच है भाई। ऐसा नहीं, ऐसे तो फिर लॉट ऑफ मैं इंडिया से ही हूँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन बट ये फैक्ट, ठीक है। And ऐसे तो फिर लॉट ऑफ इंडियंस आर रनिंग गोज एज वेल, है ना। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते किसी के लिए भी सब बराबर है, बढ़िया है, सब जगह बढ़िया काम है, सबका नंबर आएगा। भाई इंडिया बढ़िया है, अलग अलग का सिस्टम भाई, अलग अलग हिसाब किताब। हम ना बस, हम ना, चक्कर क्या है, देखो, इंडिया ना इस अपने आप में ना एक कॉन्टिनेंट है, ऑलराइट। एक पंजाबी की सिविक सेंस अलग है, एक दिल्ली या बॉम्बे वाले या बेंगलोर वाले की सिविक सेंस अलग है, एक छोटे गांव पिंड से जो आ रहा है उसकी सिविक सेंस अलग है। सबकी अलग अलग ज़रूरत है। कुछ ऐसे भी रईस के लाल भी आ रहे हैं कि जिनके माँ बाप 2-4 करोड़ रुपए साल का खर्च कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बेचारे ऐसे अपने माँ बाप को पैसा नहीं देंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। तो पता है, हम ना, वी आर ना, हम ना एक गुलदस्ते जैसे हैं। उसमें कहीं फूल है तो कहीं गेंदे का भी फूल है, कहीं कांटा भी लगा है। इस सबसे कुछ नहीं होने वाला, अभी आ जाएगा वैसे रिपोर्ट में अबाउट द पार्लियामेंट, लाइक यू नो, वो तो देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स, बट आई थिंक देयर विल बी सम सिग्निफिकेंट चेंजेस। मोटी मोटी बात एक एक खान मान दो भाई, ठीक है, जो मर्जी रूल आ जाए, जो मर्जी चेंज। अब मैं तुमको एक अभी थोड़ी बताता हूँ, तुमको ऑक्यूपेशन पकड़नी है, उस ऑक्यूपेशन में अच्छा होना है, ठीक है। और तुम्हारी ऑक्यूपेशन एस ओ एल लिस्ट में होनी चाहिए, विच आर रफली अराउंड, देयर आर 456 ऑक्यूपेशंस। जब तुम पीआर के लेवल पे आओगे तो आपको 3 साल 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस अपनी ऑक्यूपेशन चाहिए, और तुम एटलीस्ट 80-90 के पैकेज पे होने चाहिए, तभी तुम्हारे चांसेस पीआर के हैं ऑस्ट्रेलिया में, अदरवाइज तुम्हारे चांसेस मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। आर देयर एनी स्पेशल फ्लाइट फॉर रिटर्न visas, any direct pathway to PR? Yeah, either you go and transmit straight 2 years, and then tomorrow is going to sponsor you this point for 186 or 494, or we can buy you one go for 494. If you want to go for 186, or otherwise, 10 years of work experience, you don't even need to finish to get your skill assessment done, and
जब आप यार सैलरी से जब आपका एम्प्लॉयर ने 482 को स्पॉन्सर किया हुआ है तो हाइपोथेटिकल स्पॉन्सर यू डोंट वांट इट रीजन वो तो है ही पाथवे है ही my client facing this okay what is you can you February I probably missed your question can you did I answer you before okay. Or can you ask me the question again I'm not answer you because I've been I'm on multiple sites now so I've been answering few different people so भूल भी जाता है hi that is bro. Thank you for your help. Currently studying nursing on 485 visa, which will expire in December 2025. 4 महीने बाद आपका visa expire and study also will finish in September 2025. So study आपकी 2 महीने में खत्म हो जाएगी. So make sure you already got 7 each in English. Okay. देखो यार पहली बात तो अगर I am assuming you are doing okay. Can you clarify? Are you doing diploma in nursing or bachelor's in nursing? EN बनोगे कि RN बनोगे? एक बार आप clarify करो मैं उसके बाद जवाब देता हूँ आपको. What's the chances of civil engineer graduate, no experience, but have acquired point with all aspects? Which state should they target? पृथ्वीराज और पृथ्वीराज सच्चा सत्य जवाब दो ऑनेस्ट आंसर ठीक है भाई इंडिया से ना भर के सिविल इंजीनियर आया हूँ ठीक है वो साउथ इंडिया से जितने बच्चे आते हैं ना 75% ने इंजीनियरिंग करी होती है हो सकता है 5-10% भी हो लेकिन भर के आया हूँ ठीक है देर अगर when a state want to sponsor someone ठीक है honestly think about it. When a state want to sponsor someone, now there are civil engineers who are working in their occupation. उनका invite नहीं आ पा रहा है तो why should you get a chance first? तो पढ़ाई करके कुछ नहीं आता भाई जब तक यहाँ पे रोड़ी गिट्टी नहीं करोगे ना and I tell you what if you're not able if I be you ना if you're not able to get a job as a civil engineer ना start working somewhere lower नीचे से काम करना start करो eventually you reach there point चेस करोगे ना invite नहीं आएगा क्योंकि there are more people who have experience in their occupation they will this is what the states this is what see you should be job ready and the only way you can demonstrate you are job ready is you should be working in your occupation अगर सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे कंस्ट्रक्शन कर लो see don't take me wrong I don't want to sell you any false dreams कहीं धोखे में आ गया बात बट इन माय व्यू हर स्टेट की तो रिक्वायरमेंट यही है कि you should be working in your occupation. Okay, after having good experience in agriculture, my client got rejection after assessment of the profile. Okay, agriculture is a level one occupation. I can, Falguni, if you want, you can send me a chat. Now, again, answer me this: have your client have got bachelor's in agriculture? Agriculture is a level. All occupations on agriculture are level one occupations. Okay, so you need a bachelor's degree in agriculture. उसके बाद में अगर आपके क्लाइंट का रिजेक्शन आया है you can contact me and I can help your client sort it out or agriculture like again there is a lot of demand of agriculture occupations there in Australia it's and there are a lot of ways to get PR for agriculture in Australia. I have a lot of and you will be surprised to know कि यहाँ पे पंजाबी पिछले 1.5 साल ठोक के एग्रीकल्चर कर रहे हैं and they are some of them are one of the richest agricultures here in Australia with 10, 10, 20, 20,000 acre land. Okay, employers like mine, TCS, especially when they send us on deputation, they don't sponsor. Oh, bro, सुमित, वो तो उनकी स्ट्रेटेजी है भाई. मेरी बात समझो. देखो, उनका धंधा क्या है? जो जॉब मार्केट में $1.5 लाख की है, हाइपोथेटिकली, ठीक है? उसके वो जो जिसको 482 लगाते हैं, उसको वो देते हैं $80 हजार. ऑलराइट?
एंड देन वही चीज को वो 1.5 लाख का आगे क्लाइंट को बेचते हैं. दैट्स हाउ दे गेट बिजनेस. देन जो ऑस्ट्रियन कंपनी दे कैनॉट compete, क्योंकि वो when they will hire that resource for 1.5 lakhs. सो यही तो उनका मार्जिन है. और उनको पता है जिस दिन आपकी पीआर आ गई आप उसको ठेका देके भाग जाओगे. तो वो तो सारी इंडियन कंपनी की पॉलिसी है भाई. उसके लिए तो यही है कि कोई यहाँ पे लोकल पकड़ो. और आप ऑफ कोर्स व्हेन यू वर्क फॉर टीसीएस एसेंशियल यू हैव वर्कड ऑन बिग बिग प्रोजेक्ट्स. लोकल पकड़ो भाई यहाँ पे. और एम्प्लॉयर, और ऐसा एम्प्लॉयर मत पकड़ो जिसके पास 200-400 लोग काम कर रहे हो. छोटा एम्प्लॉयर पकड़ो जिसके पास 10-12-15 लोग काम कर रहे हो. उसे भी आईटी के बंदे की जरूरत है. आई एम ऑन 4. ओके. आई होप इट ब्रिंग सेंस. सुमित सुमित वो तो उनका बिजनेस मॉडल ही है यार. आज से थोड़ी ना जन्म जन्म से. ओके. परम कपूर, आई एम ऑन. What are you saying? I'm just sort of miss out here. There are a few people here as well. Okay, let's figure out this. Okay. Param Kapoor, what you said? I'm on your on 494 Dama visa under labor agreement. Can I go to India for 6 months or not? Yes, you can. If you're going overseas, there is no problem. So your पहली बात तो 494 वीजा में तो जाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. That visa is for the period of 4 years. I think you're right. The right question would be whether it will affect you when you wanna apply for 191 visa, which is a permanent visa. Correct? कोई नहीं. If you are living in other state and working in other state, then there's a problem. All right. If you're going overseas, no, that's not a problem. If you're going away for 6 months, that will still be counted. That will be fine. और यार खुदा का खासा अगर नहीं भी काउंट करेगा तो 6 महीने और खींच जाएंगे. और क्या होगा? 191 की रिक्वायरमेंट. देयर इज नो अदर रिक्वायरमेंट ना. 191 की रिक्वायरमेंट ही क्या है? You should have lived and worked in a regional area for the period of 3 years. Uh, that's what the requirement is. Even if you're actually not working and if you have a zero tax return, still also you meet the criteria for 191 visa. Okay, I am in. Okay, sorry guys, let me cut this call off. Okay, I am in 186. The permanent residency status is in further assessment since Feb 2025. Still, my visa is not processed. Bro, इसका तो आंसर देना बहुत मुश्किल है ना. All right, but I'm because if you are in further assessment, probably they are. I hope you have a very good migration agent or a lawyer. Okay, they would be again. They would have sent you for more requirements, and they would be looking into the facts that all the information you have provided is correct. They would also be looking into your employer's past conduct and stuff like that. The books, your books, the employer books, stuff like that. Whether the taxes have been paid on time correctly or blah blah blah. And again, depending upon occupation, some occupations are flagged and high risk. But again, if you want to see, uh, I would not be able to tell you when the visa would be granted. What is important is that you have provided enough information and relevant facts which support your application and you get a positive outcome. Otherwise, you already have a. I know you are waiting for the PR, but you already have your Medicare and everything else. So you got your, you've been working. So hopefully you get it soon. But yes, this is what I would be considering rather than I don't know man how long it's gonna take. It depends how complicated it is and what's the matter and yeah. 485 expiring less than a year. 9 months left to gain 1 year experience in civil engineering. Which state should I target for PR, having points in everything else? Now in LSW, but not region. Okay, so basically you are in Sydney. मोटी-मोटी बात, किसी भी रात. भाई सबसे पहले तो अपना स्किल 1 साल पूरा करके स्किल. एक मिनट यार, एक बात बताओ. सॉरी. You are what? You are a civil engineer. Okay. या सिविल इंजीनियर तो वैसे ही इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से तुम्हारा स्किल असेसमेंट बन जाएगा. उसके लिए आपको 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है. है भाई. If you're working as a civil engineer, or आप
बीटेक सिविल हो, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो इंजीनियर होते तो वैसे स्किल असेसमेंट हो जाएगा। दूसरा आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि इफ आई बी यू भाई स्टिक करो सिडनी के अंदर में एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर पार्टनर है तो पार्टनर की स्किल असेसमेंट कराओ, स्विच लाओ। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज एंड यू माइट see we civil engineers we need, and if you are working in your occupation, I suggest you stick to Sydney because see कहीं और स्टेट में भी जाते हो, if you find a job that's well and fine, but I don't understand 1 year work experience in engineering. Okay, 9 months left to gain 1 year work experience in, that is fine. Okay, okay, so you probably have a skill assessment, apply करो ना यार। again depending upon है, अभी देखते हैं क्या क्राइटेरिया क्या आता है। वी डोंट नो येट, ठीक है, व्हाट इज द क्राइटेरिया। अभी तक न्यू सर्विस का क्राइटेरिया नहीं आया। आई होप 6 महीने का क्राइटेरिया आए तो यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस फिजिकल ईयर। अदरवाइज कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एंड वंस यू हैव योर 1 year of work experience, you are working as a civil engineer, also keep try to keep good relationship with your employer. He can sponsor you on 482 visa as well। बाकी डिमांड में तो है ही। द गुड थिंग इज यू आर वर्किंग इन योर ऑक्यूपेशन, सो देयर विल बी अ वे, ऑलराइट। और ऐसी बात नहीं है। आई थिंक देयर विल बी अ वे आउट। आई नो टाइम इज शॉर्ट, बट आई थिंक निकल जाओगे। It will be good for you। या guys, मैं आई डोंट टेक रिक्वेस्ट टू बी, पता नहीं कौन आ जाएगा वीडियो में क्या कर जाएगा, ठीक है। डरने वाला आदमी है भाई। एंड तो आई एम नॉट सेइंग ही gave money and don't। मेलबोर्न प्लेस। थैंक यू बॉस। Hello sir, you didn't tell about my condition. It's bachelor's of nursing। हाँ brother, I asked you that question ना। I'm happy to now। Okay, bachelor's of nursing है। और क्या था यार, फिर से बताना। पहले भी क्या क्वेश्चन था ये तो मैंने पूछने में भूल गया है। यू आस्क मी कब खत्म हो रहा है यार ब्रदर, बताना। ओके, इस बैचलर ऑफ नर्सिंग तो आरएन बनोगे। देखो, सबसे पहले भाई मेक श्योर करो कि यू गॉट 7 इन इंग्लिश। ओके, मेक श्योर कि यू गॉट 7 इन इंग्लिश। ओके, क्योंकि वो नहीं होगा तो तुम्हारी स्किल असेसमेंट नहीं होगी। एक बार तुम्हारी स्किल असेसमेंट हो गई ना तो आरएन बन गए तुम। जब आरएन तुम बन गए ना, एक बार इतना याद रखना मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया से आरएन बन गए हो ना, उसके बाद वो तुम्हारी आरएन डिग्री है ना, न्यूजीलैंड में भी चलेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी चलेगी, कनाडा में भी चलेगी, यूएस में भी चलेगी, यूके में भी चलेगी, और 50 कंट्री में चलेगी। आपका भविष्य सेफ है। हाँ, अगर उस टाइम तक आपका इनवाइट नहीं आता ना, ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो कि अपनी डिग्री पूरी करने की, 7 इंग्लिश में लाने की, सो यू कैन गेट योर स्किल असेसमेंट एंड यू आर आर एन। उसके बाद में है तरीके फॉर यू टू, एंड हो जाएगा आपका काम। बिकॉज वी नीड नर्सेज। नर्सिंग एक ऐसी चीज है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक बैक इन इंडिया की जितनी मर्जी नर्सेज बना दी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया कैन ओनली मेक 15,000 नर्सेज इन वन पर्टिकुलर ईयर, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द नंबर ऑफ बेड्स। सो आई थिंक यू विल बी फाइन ब्रदर, स्ट्रेस आउट मत करो। गेट फिनिश योर नर्सिंग and get your skill assessment. So once you become a registered nurse, there will be around। Oh, thank you, brother। All right, guys। You already told me your visa expires in December और सितंबर में आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ रात से निकल जाएंगे। अभी सिर्फ आप ध्यान दो कि आप आरएन बन गए। आरएन बन जाओगे ना, ठीक है, आप यू कैन कम एंड कनेक्ट, अगर नथिंग वर्क्स आउट फॉर यू, ऑलराइट, यू कम टू माय ऑफिस। I'll tell you the ways how to move forward with it। There are many ways to get things done। There are many options to get things done। That's not a problem।
and it is simple. We don't charge anything. It's a free of cost. आप तो यहीं ऑस्ट्रेलिया में हो, आप व्हाट्सएप पे जाके just simply you can book the consultation. It's so easy and happy to help you out and still you got time. Again, सिर्फ आप concentrate करो, stay करने की चिंता मत करो. There are ways around it. आप अभी concentrate करो. I understand. आप सिर्फ concentrate करो कि आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए और आप RN बन जाओ. बाकी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी. Please help me. Can I change my employer or not? Depending upon what visa you are currently on, you can definitely change your employer. That shouldn't be a problem. If you tell me your visa subclass, I will actually tell you, um, what criteria. I am very stressed in my workplace. Sorry to hear that. Again, are you on 482 or like what's the employer sponsorship? I'm anticipating it is 482. Just tell me that so I answer you, like then I can give you a more accurate answer exactly what you need to do and how, and please do, yeah, they're always with. I'm on 494 Dama visa under labor agreement. Bitch. Okay, in IT sector. Wow. Tell me one thing, so you waiting for your 494, correct? All right. Okay, I'm sorry. If you got 494, you can work for any employer you want to. You don't have to stick with your employer. Okay, the only criteria on the 494 is just go and read on the visa, like go and read on your visa grant. Okay, if you're currently on 494, okay, the criteria on the 494 is that you need to live and work in the designated area. The definition of designated area is anywhere other than Sydney, Melbourne, and Brisbane. So there's no drama. You can leave the job tomorrow. It would not affect you if you already on 494. See, if your employer has applied for 494, then you cannot leave. You have to wait for it. But if you are on 494, you are independent. Just showing the middle finger and leave if you're not happy with your employer. And you can sit home, you don't even have to work, or you can work anywhere you want to. Anywhere in Australia other than Sydney, Melbourne, and Brisbane. You would be all good. Because when you're applying for 191, the only criteria would be that you've lived in a regional area and worked in a regional area for more than 3 years. I hope it takes out your stress. Okay, condition 8608. Okay, the condition 8608 would apply to you when your employer has lodged 494. If you have already received 494, you should not have a problem. How's about this? Okay, let me maybe, okay, do me a favor. Can you, we can work this out, okay? Can you actually send me a visa grant? So there's a link on WhatsApp. I'm not going to charge you my consultation. I'll provide this advice for free of cost, okay? Because you're spending your time with me here. I'll provide this advice for free of cost. Can you do me a favor? Can you actually on the WhatsApp, can you send me a visa grant letter? I'll look at it and and then I'll answer you what you need to do. But I think we can get you out of this problem. Let me have a look at it first. All right. The worst come to worst, we might have to speak with the Department of Immigration. And that's we can sort this out. I think so. But again, if you send me a visa grant letter, I would be able to give you more accurate advice. Okay. Why is this taking so long? My mother has a medical condition and I can't leave to see due to the visa I am on. See, I don't know what visa you're on. Okay, you are on a Beijing. Okay, if I leave Australia, they will cancel my Beijing visa. Yes, bro. So that's a nasty visa. Beijing visa E. Have you applied for any other visa which covers you up? Generally speaking,
there would have been a lot of mishaps before you got over visiting visa E. There would be a lot of visa cancellations and stuff like that. You're very welcome. Oh boy, I've been on a 711. I have on a partner visa for 5 years. Oh, okay, so when you say you are on a partner visa, so you have applied for the partner visa, I'm assuming that because once you get your partner visa, you won't be on a bridging visa E, correct? Or you applied for your partner visa when you were on a bridging visa E. I hope you have met the Schedule 3 requirement. अंग्रेज सिंह आर्मी जलालाबाद बताएं. I have studied 2 years in Australia, Sangani, Bhavin. Bhavin, that's Gujarati, isn't it, bro? I have studied 2 years in Australia. I am not working right. I have 5 years experience in India. I can apply for 186 direct entry, horticulture. I, I coming visit and visit. I am in 80. Bro, if you are in 80, that means your visa was been refused. If your visa was been refused, now when you say horticulture 5 years work experience, contact my office. We need to firstly get your skill assessment done. Or if you already have a skill assessment done, or then you will be able to see if you're gonna apply for 186 because you are on AAT. That means your visa was refused. That means you also have Section 48 bar. Now, consider applying 494. If you apply 494, you will get a waiver of Section 48 bar. If you apply, you can apply 186 as well. But to apply 186, what you got to do is you need to do your nomination over here. Your visa application has to be get ready. I am assuming you are on a breathing visa A. If you are on a breathing visa A, we can get you breathing visa B. Once you get your breathing visa B, you can fly overseas, lodge your application, and come back to Australia. That's one way of doing it. Otherwise, if you're doing 494, that's a better option. Anyway, the horticulture, so there are a lot of jobs off, in the regional areas. Um, do that. I- Again, संज्ञानी जी, you're right. व्हाट्सएप करें, बात करते हैं. मैं आपको तरीका बताता हूँ, बट यस इट्स वेरी डूएबल. अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो एम्प्लॉयर मिल जाएगा, अगर आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस है तो यहाँ तो घूमते हैं हॉर्टिकल्चर में लोग काम करने वाले हैं. जस्ट ब्रिजिंग वीजा ई फॉर 5 years. Bro, अभी तो आप you said before कि you are on a partner visa, so like I'm not very clear. Again, book a free consultation. I will, one of the team members will talk to you one to one. You will not have any problem. Anna Jati, thank you. पाकिस्तानी के सीन यस करा दो बॉस. अरे पाकिस्तानी से हमारी इतनी दोस्ती है, आपको क्या बताएं. वो तो इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा है, यहाँ हमारी भैया ऑस्ट्रेलिया में तो दवा की दोस्ती है. इनफैक्ट मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त भी है, मैं क्या बताऊँ. हमारी तो बेगम भी वहाँ से. छोड़ो यार. वो सीन आने वाले बहुत पाकिस्तानी है यहाँ पे. दादा प्रसाद जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू. राहुल थैंक यू. Saying thank you is quite a waste of time, correct guys? Anyway, सबको thank you है ही है. Yeah, I've been on a bridging visa for 5 years with you guys. How long will it take me to receive? All right, bro. So you're an existing client, so you're on a bridging visa 5 years. We applied for the partner visa, bro. From heart, I want you to get your PR as soon as possible, bro.
We really want you to everything get sorted out, but it's the Department of Immigration. The wait game is on, but I personally believe that you're gonna get it very soon, brother. And I really appreciate you being with us from last 5 years, brother. The day you get your PR, I would be the happiest guy, bro. And of course, you would be more happy than me. It's about your life. And we'll open a champagne in my office. Love you, bro. Take care. Now I understood. Sorry, bro. I got few hundred clients. Now I remember. Okay? Love you, bro. Sir, I'm very stressed for my employer. Okay, do me a favor. As I said to you, you send me that WhatsApp and we'll sort things out. Okay, हो जाएगा. All is well. All is well. तो कोई बात नहीं है. अपन आपके दिमाग को भी टंगा देंगे. All is well. All right. You, if you are stressed out, you are not forced to be. We can speak to the department and we can get the waiver. Trust me. Send me your WhatsApp me, and then one of the team members will get in touch and we can personally look into this. And it's very early for me to say anything. I know, brother, because you have a bridging visa E. I completely understand, brother. But there was a reason why you had a bridging visa B, because you were unlawful before you do the partner visa, correct? That's why you have a bridging visa B. Once you get your partner visa, because it's been so long, it will be directly permanent visa. Once you get that, you are a PR, then you go home. Wonderful. Get me a box of sweet and I'll open a bottle of champagne for you, brother. What is the chance of retail manager in 482 in Sydney, sir? 100% है भाई. ये तो अभी गेम चेंजर है. Doesn't matter whether you're working in a cafeteria, whether you're working in 7-Eleven, whether you're working in a grocery shop, all right, as a retail manager, 3 साल से ज़्यादा काम कर रही है, फुल गेम चेंजर है भाई. अभी इतने लोग इतनी एप्लीकेशंस गई हैं ना इसके अंदर में. ये तो पहले था ही नहीं ना. रिटेल मैनेजर हो गया, फ्लीट मैनेजर्स हो गए, ट्रकिंग वालों का भी काम बन गया है. ये तो भाई फुल गेम चेंजर है. 100% होगा ना. कोई चक्कर ही नहीं है. यू मीट द क्राइटेरिया. एम्प्लॉयर का टर्नओवर है. अब टर्नओवर सभी का अच्छे ही होता है यार. एंड एवरीबॉडी नीड्स अ रिटेल मैनेजर. एवरी रिटेल बिजनेस नीड्स अ रिटेल मैनेजर. ये तो बहुत ही बढ़िया शॉट है यार. ये तो बहुत लोगों का रास्ता खुला है इससे. तो इवन यू वर्किंग पेट्रोल पंप में काम कर रहे हो, ग्रोसरी शॉप में काम कर रहे हो, इवन कैफेटेरियाज में काम कर रहे हो जहाँ पे ना, या फास्ट फूड चेन्स में जिसके अंदर नहीं लगता था पहले, वहाँ काम कर रहे हो. ये तो बहुत लोगों का रास्ता खुला है. Yes, sister, you already asked me this question. Send me your, and contact us. As I said to you, I'm happy to talk to you tomorrow. Don't stress out. There are always way around it. Like, it is very hard to give you a detailed, precise advice. Like things what I'm saying over here, no one should consider them as an legal advice, because information what I give you on a basis of very limited information, and it's more like a general advice. But as I said to you, I would love to get into this and look into it for you. Please don't stress out, and I'm sure there would be a way, and then I can talk to you tomorrow over the phone or to one once I see your visa grant letter. I'm so sorry to hear that. Thank you, brother. I really wish you get your PR as soon as possible, brother. मैंने आपको कृष्णा ये बोला है कि आप प्लीज स्ट्रेस आउट मत करो. ठीक है. आप मेरे को डीएम पे व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें आप अपना वीज़ा ग्रांट लेटर भेजोगे. वीज़ा ग्रांट लेटर आप व्हाट्सएप से भेजोगे, आपका नंबर भी मेरे पास आ जाएगा. ठीक है. आई विल मैसेज यू टुमारो. आई विल लुक इनटू द ग्रांट लेटर फर्स्ट एंड देन आई टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन और क्या हो सकता है. ठीक है. आप चिंता मत करो, बेफिक्र रहो. आई डू माई बेस्ट. I have done bachelor's in business analytics and expected point is 94, 189, 105, 105 टाइम एंड 105 for 491. एक ही बात होगी ना. अगर आपके पास 90 पॉइंट्स होंगे तो 15 पॉइंट स्टेट के बन जाते हैं. ठीक है. व्हाट शुड आई डू? डू आई नीड टू डू मास्टर्स इन रीजनल एरिया टू बूस्ट पॉइंट्स?
मेरे भाई, ये सवाल करना अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, either are you working as an as a BA or no? भाई जैसे वो 3 डेट में कहा था ना, तू भाई स्किल की तरफ भाग। अगर तो तू बीए एज आईटी में काम कर रहा है ना, तो मास्टर्स करने का मतलब है तू पॉइंट की तरफ मत भाग। और नहीं तो तू एक काम कर मेरे भाई, कुछ साल हो गए देखे हुए, 3 इडियट्स आज फिर देख के आ, तो फिर अपन क्या बात करते हैं। भाई 600 के एनुअल इतना कमा रहे हो तो फिर मेरे से बात करने की क्या जरूरत है भाई। ये का जीरो जीरो आगे बीस होने लग गया। फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन में आज ही किसी से बात कर रहा था, गिव मी 1 सेकेंड। Chandriyazu. Chandriyazu, like I don't know how to say first. Chandriyazu. Alright. Okay. Let me give me 1 second. Let me check something for you. Give me a sec. Okay. Are you working as a pharmacy technician as well? My first question to you. Second would be, where are you currently? In which state you are? Where are you currently? My third question to you would be, what visa are you currently on and when does your visa run out? Once you give me these answers, I would be able to give you a better advice. Once you tell me about this. If you type that down for me, I'm more than happy, or otherwise book a consultation and like one of the team members would love to talk to you. भाई if you don't have experience, अभी मेरी बात मान जा, फायदा क्या है फिर एक बार बता इसे पढ़ाई करने का। सच्चे मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है इसे पढ़ाई करने का। भाई ढूंढ, कुछ भी फील्ड पकड़ना। अभी व्हाट यू डू फॉर वर्क नाउ, ठीक है? कोई भी फील्ड पकड़ भाई, उस फील्ड में जिसमें तू एक्सपीरियंस कर सके, जिसमें तू काम कर सके। बैचलर्स तूने कर ली है, अभी तेरे को एक्सपीरियंस है नहीं, जॉब लगा नहीं, मास्टर्स करेगा, पॉइंट के पीछे मत भाग भाई, स्किल के पीछे भाग। स्किल के पीछे भाग, तेरे पीआर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसमें देख, पॉइंट के पीछे भागना बहुत आसान है, तेरे को ज़्यादातर लोग भी बोलेंगे, क्योंकि तू जब मास्टर्स करेगा, मैं तेरे मास्टर्स कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें कमीशन मिलेगा। तो बहुत सारे ज्ञानी मिलेंगे तेरे को कहने के लिए, मास्टर करने के लिए। लेकिन पहले ढूंढ कि तू क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू सके, आप वो ढूंढो। और जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे है ना, यू कैन तुम भाई बाल काट के भी पीआर ले सकते हो, कोई भी ट्रेड करके भी पीआर ले सकते हो, लेकिन स्किल की कीमत है। पढ़ाई करके ना अपने पैसे खराब, पहले माँ बाप के खराब करे, अब अपने खराब कर रहे हो, आगे और खराब करोगे और अपनी मेहनत खराब करोगे। उसकी जगह कोई भी स्किल में जॉब करो। हाँ, और अगर नहीं है तो शायद हो सकता है आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। वन टू वन आओ, बात करेंगे, मतलब वी नीड टू गो मोर डिटेल इनटू इट, बिकॉज़ वी आई डोंट नो आप क्या करते हो, अभी कैसा करते हो। लेकिन भाई मत करो, पैसे खराब करोगे अपने। हाँ, 600,000, 100% bro. Even like, see, okay, even if you, okay, I had employers who have a turnover of 250K, all right, and they still sponsored someone, even actually lower than that.
and they still sponsored someone, and we were able to get through. As long as we can demonstrate that there's a need of a particular person in your business, and we can demonstrate that the business can afford to pay them, a turnover with 600K can pay 80 90K in salaries. That should not be a problem. Please, again, WhatsApp us. Love to talk to you one to one. Look into the profile of like whom you want to sponsor, and we can discuss that. But 600K should not be a problem whatsoever. I have probably done hundreds of 402 applications in my career with your or lower turnover growth. So all good. Shouldn't be a problem whatsoever. भाई ट्राई करो if और आ रही है तो वेल एंड गुड है. ओके. और इनवाइट तो यार पता ही नहीं है ना यार. ये तो मैजिकली है ना यार भाई. ये तो मतलब थोड़ा सा नोटिस सिस्टम है ही है. हाँ, अगर इनवाइट आया थी तो वेल एंड गुड है. नहीं तो एज अ प्राइवेट ट्यूटर आई एम होपिंग यू आर वर्किंग हियर एज वेल. आई डोंट नो विच स्टेट में काम कर रहे हो. डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट में आप काम कर रहे हो. एंड सर 485 में 4 पॉइंट है. नॉमिनेशन नहीं आ रही एज अ प्राइवेट ट्यूटर. भाई प्राइवेट ट्यूटर की वैसे भी देखोगे तो कितने इनवाइट आए हैं. ज़्यादा इन्वर्ट आए नहीं. ये ऑक्यूपेशन है नहीं इन्वर्ट वाली. एम्प्लॉयर ढूंढो स्पॉन्सरशिप के लिए. बहुत ज़्यादा बेटर हो गया. थैंक यू सिमरन. थैंक यू मुकुल. That's all right, Sachin. All good. I can speak to you in English. I have moved to 4. I haven't moved to 485 yet. I was being planning to do masters in research, boost 10 point and 5 point. And don't chase points, brother. As I said to you, all right. Don't chase points. Chase skills. If you think you can work, all right. If you think you can work in your occupation, then only do masters. But if you just for the point sake, if you go, probably you will be disappointed. That's what I'm trying to say to you. What I'm trying to say to you is, rather than looking at particular qualification, look at some occupation and look in which you can work, which suits you, which you in occupation which you love to work. Choose that, and then see what qualification attaches to it to get you to that. Because at the moment you've done your bachelor's, you haven't got the job. Then you're gonna do your masters, you still haven't got the job. So you're wasting your money, you're wasting your parents' money, and you're wasting your youth. The most critical thing, your time. Because this is the time for you to learn a skill. That's what I'm trying to say to you. Or if you want to do masters, yes, you can do masters. A lot of people will say yes to you because when you do masters, then you make a commission. Otherwise, so my mouth is drying up. You gotta make money too. So if you want to do masters, you can come. I can get you admission. I'll get my commission. I love it. But what I suggest to you is don't do that. Look deep into it. Look into yourself. See what you can do. If you I'm not working in the field now. I'm on a student visa and I finished Feb 2026. Now I'm in Victoria. If you are in Victoria, you're not gonna get invited unless you're gonna work in Europe. Simple as that. Look at it now. Look, look at the last 3 years. If you are not even be eligible to apply for ROI, so you gotta work in your occupation. Work in your occupation. mm, we can talk about this. You're already on a student visa. We can talk about this. What you need to do, but you need to work in your occupation, and it doesn't matter whichever state you wanna go. Even like if you can get a job in Tasmania, go there. Like you will meet the criteria, and Northern Territory, wherever you go. But you will need to, without work, you're not going to get an invite. That's my view. I could be wrong, but yeah, that's only how it's going to be. All right. Yes, brother, for standard as I can get you, if you got a 600K turnover, I get you the SBF license. No problem. Contact me, contact my office. Let's have a talk over the phone. I'll explain you everything. No drama. I can get you the SBF license. 600K is more than enough. You do meet the criteria. Thanks, Sachin. Don't take it hard, but I hope you understand what I'm trying to say.
Yeah, definitely. You can sponsor on 482, you can even sponsor on 186. And again, you can even sponsor two or three people depending upon, I don't know the nature of your business and I don't know which occupation we're talking about. But then let's talk tomorrow, all right? And or anytime when you feel like, just go on WhatsApp, talk tomorrow. Ask for me. Usually I don't come on the calls. Ask for me and I'd love to talk to you guys. Bro, agriculture consultants are good, no problem. But again, remember one thing: you should have some years of work experience to be agriculture consultant. There are many occupations in agriculture. Uh, if you would be working as a agriculture, first of all, okay. First of all, when you talk about agriculture, it's gonna be in a regional area, है ना? सिडनी में और मेलबर्न में तो कोई खेती करेगा नहीं, करेक्ट करो भाई? इसका और ये ब्रिस्बेन में मेन सिटी में तो कोई खेती करेगा नहीं. It's gonna be a regional area. So if you if you work as an agriculture consultant, थोड़ा सा वहाँ पे हार्ड इसलिए हो जाता है. See, if you're working as an agriculture consultant in any state, I think you will get it. But if you're thinking कि just if you're thinking कि only studying and getting the skill assessment will get an invite, मुश्किल है मेरा भाई. Bhargav, so are you in Australia or outside Australia? If you are in Australia and you got a student visa registration in December 2023, that means your cases in ART, contact our office and I can guide you. That should not be a problem. When we can talk about it, your situation. There are even possibilities to apply PR even when your case is in ART or in courts. Okay? Is 482 visa easiest and secure way for PR? Sir? Absolutely. Absolutely. Even better is 186 visas. Even better is 494 visas. See, generally 482 visa is for someone who do not have 3 years post-study work experience. If you got 3 years post-study work experience, alright, I rather suggest you to straight away apply for 183 visa. But again, I'll be very practical. A lot of employers would not do that. A lot of employers would like to go for 482 visa. Okay. Well, because they wanna keep employees for few years. But again, it's a business strategy, and I don't say it is wrong. They are also investing on their employees, so it is all good. But again, we can talk about it. But yes, for it is a direct pathway. But again, that is only if you have 1 year of work experience. If somebody has 3 years of work, because end goal is getting clear, correct? So, but we can again talk about it, and we can see what the exact situation is. And again, depending upon what the nationality is, whether the skill assessment is required or not. But we can always talk about this. भार्गव भाई फिर भी हमें ऑस्ट्रेलिया आ जाओ भाई फिर पढ़ो लिखो कुछ करो आ जाओ कौन रुक रहा है? पैसा है तो देखो आ जाओ भाई पैसा तो मांगे नहीं करते ना ऑस्ट्रेलिया मांगे नहीं करता पैसे वालों को. Namaste mates. Okay, I am from mechanical engineering and I have 8 years experience in IT. 5 years in India and 2 years there in Australia. My wife did masters here in cybersecurity. 3 years work experience in India. PR question mark. Okay. Mm, again, like if you are in IT, आपको पता ही होगा probably you need like what 90 95 points or 105 points. I am anticipating that you are working for one of the Indian companies जो कभी sponsor नहीं करते हैं. See, your best bet is you and डालो आप तब तक है. But if I be you, I would look for an employer to sponsor you. It could be either any of you because your wife also got 3 years of work experience in India. You got 5 years of work experience, so any of you can get sponsorship. Mm, Look for 186 employer sponsorship. That's what I would be doing. Baki, do your best. Get try to score more in PT and blah 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 and all that stuff for invite stuff. Because both of you partners will be able to have skill assessment and stuff like that. So we get those 10 points as well. And she studied in Australia, so that gives you extra 5 points too. So that's all good. Otherwise, yeah, I would consider I would look into employer sponsorship. भाई फ्री में ऑस्ट्रेलिया आना है लेने
ओ मेरे भाई, फ्री में तो तेरे को पता है ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ तो फ्री में गाड़ी भी बाहर नहीं खड़ी होती, गाड़ी की भी पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं पहले। चलो भाई, यही से तुम जो करो भाई, अरे भाई तो टाइम की वेस्ट कर रहा है जाना। ब्रो, फोन नंबर डीएम में है। आई वांट तो भाई जॉब नहीं है, मुझे तो ढूंढनी पड़ती है। जॉब छोरी पैसा ये तो कभी ढूंढना पड़ता है। Does 485 visa have same chance every part of Australia, sir? Considering- Yes, the criteria is same. Doesn't matter where you go, the criteria is same. And if you work on 482 for 2 years, then and if your employer willing to sponsor you, then you can move to 186 transistor. No, there is no priority for 482. It doesn't matter whether it is a regional area or whether in a metropolitan city. And with CIS also, 482 outcomes are also coming very fast. Sorry, mate, I can't find you a sponsor. You gotta find an employer by yourself. You got 2 years of work experience. Though I would suggest you, I don't know what your specific occupation in IT is. If you take my advice, don't go for very, very big companies. They don't sponsor people. Rather choose employees here who got 6, 7, 8, 10, 15, 20 employees. Small employers. Even a small employer with 10 employees in Australia would have a turnover of 3, $4 million, and probably they would, and if you can, prove yourself well to them and solve their problem, more than likely they would sponsor you rather than going for a big company. They don't have a problem to replace people. Bro, there's not a problem when we have to lodge an application. Usually SBS license comes very fast, 4 to 6 weeks, but we can lodge SBS nomination and visa application on the same days. Though of course, before applying for a nomination, we need to run the ad for at least 28 days. And yeah, to meet the criteria, one of the criteria is. What do you suggest for people in family business in India and want to move to Australia? It depends upon what family business you have. If you have a decent turnover, Gaurav, आप अपना बिजनेस को यहाँ पे भी बढ़ा सकते हो एक्चुअली। ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, ठीक है? मतलब ये भी ना बहुत ब्रॉड बोला आपने, फैमिली बिजनेस है Gaurav, ओके? सो लेट मी गिव यू एग्जांपल हाइपोथेटिकली जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आपका रेस्टोरेंट इंडिया में, ओके, हाइपोथेटिकल, ठीक है, आपका रेस्टोरेंट इंडिया में कहीं पे भी, आप उसी रेस्टोरेंट के बेस पे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो टू ओपन अदर रेस्टोरेंट हियर इन ऑस्ट्रेलिया। So again, we got to look into it, and we can, work things around. Up tag though, you want to, like, and you want to start a business over here, or again, I'm just giving you a, like, एक आपको ओपन सजेशन टाइप से दे रहा हूँ मैं। ऑलराइट, मैं आपको ओपन सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ओके? बट अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू। और वो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, वी कैन टॉक वन टू वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्पेसिफिक सिचुएशन, एंड देन probably we can advise what can be done, what cannot be done. But yes, there are a lot of pathways, and that's how businesses work. After 36 age, which study path is best for PR?
Are you already here in Australia? Because if you are not here in Australia at the age of 36, अभी तो वैसे ही मेरे ख्याल से वीज़ा लगने बहुत मुश्किल होगा. Especially if you're thinking कि पार्टनर के साथ वीज़ा लग जाएगा, स्टूडेंट वीज़ा, तो I think it's gonna be really tough. What I suggest to you is कि वहाँ पे लोकल एजेंट से बात करो आप. That would be better for you. Gaurav, WhatsApp number is on DM. So you can just find the WhatsApp number and you can click from there, and you can see, just send the message there, and then one of the team members will get back to you. Yeah, of course. Yeah, Gaurav. As I said, there's a WhatsApp number. जैसा आप वहाँ पे मैसेज करोगे तो आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा. वहाँ पे आपको लिंक भी मिलेगा. You can connect to the link, and we can set up a consultation, or even you send a message there, and somebody will get in touch with you from the team. ये लोग बहुत कमाल का है. ऐसे ऐसे बढ़िया हांडी लगाता है ना. इसमें नहीं आपके. Sir, if my certificate is cancelled, what's the chances in my ART now? मोहम्मद भाई बात करें आके, बताते हैं आपको क्या चांसेस है. ठीक है. ऐसे तो बताना मुश्किल हो जाएगा. बट अगेन, अगर कैंसिल भी हो गया ART में, तो दूसरी पढ़ाई करो मेरे भाई, तभी आपका गेम बनेगा. ऑलराइट यू वेट. चलो भाई, अब तो अपनी भी हिम्मत खत्म हो गई, आप लोग भी थक गए होंगे हमारी बातें सुन सुन के. ठीक है. हाय जय. Bro, if you really ask for me, ECT, if it's your wife wanna study it, I say yes. If you wanna study it, I say no. Basically, I'm like, don't take me. I'm not like, like, I'm not racist, or like, I don't gender. But if you like, I don't know if you have ever actually been to childcare here in Australia. 90% of people who work in childcare, they are female, and they do a better job than us. बच्चे संभालने का ना. And again, I'm not like, discriminating anybody on the basis of, but this is a fact. And there are some guys which I've seen in the past. They are like gay who work there, but hardly you see any boys working there, bro. तो दूसरों के पीछे ढूंढो ना, PR के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो. ब्रो ऑफिस आओगे, दिखाऊंगा इसी साल में 50 आपको एसपीएस लाइसेंस दिखाऊंगा इसी साल के. तो बाकी पीछे के छोड़ो. I'll show you 50 SBS licenses. We do probably 8 to 10 485 482 applications every month. So, bro, yeah. I'll show you a few for this month, from this month itself. Okay, bro. Okay. So, guys, I hope we have done a lot of chatting today. And again, guys, we are trying to get better. The whole idea is we have just started this studio. We have opened the studio here in Australia. And bro, don't take me wrong, but like, that's my personal view. All right. Um, Thank you, sir. I can call you on Monday morning, and what's your 9 a.m. please.
Sure, brother. Sure, sure. For sure. Wait for your call. Actually, not 9 a.m. Call us 9:30. We start our office from 9:30. So if you call after 9:30, that will be great, brother. Take care, brother. Have a lovely weekend. All right. Okay. Yeah, this is interesting, though. Guys, I'm also getting myself familiar. We have built this studio here in Sydney, like it's in Parramatta, just on the ground floor next to Westfield Shopping Centre. And the whole idea is to getting live, like all time, and try to help migrants, without charging, and anybody can connect us from anywhere from the country, and we can help them out getting their problem solved, and yeah, try to do our best. Brother, 407 training visa, is it possible? Yes, brother, it is possible 407 training visa, but we need to be very specific about it, and we need to make sure the criteria is met. I do a lot of 407 training visas. That the training plan is the most critical part of it, and other eligibility is the other critical part of it. For example, like your studies should have finished within the last 2 years, and and you should at least have 12 months of work experience in your occupation. Yes, training plan is possible, but again, I suggest it's generally better to go for 482 visa. But if the salary is the issue, then yes, you can go for 407 visa. Sir, I'm doing English course for gap of 5 months before I study nursing next year. I am bit I am a bit graduate. Is there any problem? No problem, bro. If you have got your admission in nursing, go for it. That's all fine. Just make sure, like, you gotta get 7 each. Remember to get the skill assessment. Doesn't matter. Safe study. Where you from? I'm in Sydney at the moment. I've been living in Australia last 25 years. I feel like I'm in Australia now. Safe Shakil. You're welcome, Ahmed. Okay. Martina. Yeah, sure. How can I move easily in Australia? Where are you? आप कहाँ पे हैं? इंडिया में पाकिस्तान में? सिंधु जी, thank you for joining. All right. Okay. Okay. All right, guys. I think I'm just waiting. Seth Shakil G for a response. Otherwise, I'll be online tomorrow as well. We can talk again tomorrow. Thank you everyone for listening me out. And yes, the idea is that, like, when I say tomorrow, I'm going to say Monday. I might come online. I'm not sure because I'm out in the ocean on my board. I got to do a few things as well. And five others sent you a request to be on a live video. I want you guys to be, like, it just scares me out to get somebody on the live video. I've never done this before. Let me do a bit of my research before I can, do
do this. And thank you, sir, for Monday. Thank you, brother. Thank you, everybody. Take care. I really, really, I appreciate you all been listening to me, and we'll be there again. Talk again. Love you guys all. Take care. Bye for now. You get it? All right. Okay, guys.